Good evening. Today's lecture topic is conservation of natural resources. Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. This is the version of Mahatma Gandhi. Conservation of natural resources. As the human population is growing continuously, the consumption of natural resources is also increasing. With the increase of industrialization and urbanization of the modern human society, the use of all these resources is increasing day by day. If these resources are not properly managed and used, there will be a serious scarcity of these resources. So we need to conserve the natural resources, such as plants, especially for agriculture and forestry. So conservation is the proper management of a natural resource to prevent its exploitation, destruction, or degradation. Why should we conserve natural resources? As we know that nature provides all the basic needs which are necessary to us, but we are over exploiting or overusing these natural resources. If we go on over exploitation, the nature, there will be no more resources available in the future. So there is an urgent need to conserve the nature. Here are some needs. To maintain ecological balance, for supporting life, to preserve different types of biodiversity, to preserve the natural resources for the present and the future generations. What is calling for our attention? India as country is blessed with rich natural resources, but from our research on the uses of natural resources in our country, we found that the resources are depleting every day. For example, forests and arable lands is being depleting due to urbanization, overpopulation, and overconsumption. Wildlife resources are being lost due to illegal poaching, hunting, and industrialization. Water resources are being contaminated, are dying up due to industrialization. The government of India has undertaken many measures for the conservation of natural resources. Number one, by the regulations and reforms for proper utilization and infrastructure development, mass media public service manages to educate the people on the importance of the conservation of resources, increase the wildlife and forest resources in the country. There are several schemes to do a proper inventory of the resources and monitor the changes in the environment. Besides various projects and schemes
that promote conservation of natural resources also implemented. So natural resources should be conserved, such as soil, means not over use of the synthetic fertilizers, water, biodiversity, and forest. Soil conservation measures should aim at preventing or at least minimizing soil loss at every level. In order to this, proper land utilization coupled with agriculture practices should be adopted. Some methods of conserving soil, such as crop rotation, mulching, strip cropping, dry farming, etc. This is a type of mulching. This is strip farming. This is crop rotation. एक फसल के बाद अगली सीजन में हम दूसरी क्रॉप लगा दें, जिससे कि जो मिनरल्स की कमी हुई है मिट्टी में वो दूर हो जाए. एंड दिस इज ड्राई फार्मिंग, एक तरह से कम पानी में फसल को उगाना. Likewise, the conservation of water is also necessary. A step to conserve water is the step to secure the future. The most essential among all the natural resources on earth is water. A drop of water is worth more than a sack of gold for the thirsty man. So water conservation is what that can reduce the scarcity of water. It aims to improve the efficiency of use of water. So tips to save water: avoid leakage of the water from the tap, turn the tap off when not in use, conserve rainwater, or rainwater harvesting is the another method to conserve water. The water supply should be limited in those areas. Sir, what is mulching? हाँ बोलो, बताओ. Sir, mulching क्या है? आवाज नहीं आ रही है? वीडियो दिखाई दे रहा है? सर वीडियो दिखाई दे रहा है सर. मल्चिंग क्या होता है जो आपने अभी एग्जांपल में बताया ना सर? हाँ तो एग्जांपल बेटा पढ़ाने दो, बाद में बताते हैं. ओके सर, थैंक यू. है ना, बीच बीच में मत टोको ऐसे. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग is very important, like the soil conservation. Rainwater harvesting can be done by making the tank in our houses, making ponds, water being wasted in cities of India. पानी अक्सर हम देखते हैं कि जगह जगह पानी इसी तरह बहता रहता है, टंकियों से बहता रहता है, बाकी जगह बहता रहता है. So save water, save life. Conservation of biodiversity. Biodiversity provides the base for the livelihoods, cultures, and economies of several hundred millions of people, including farmers, fisher folks, forest dwellers, and artisans. It provides raw material for a diverse medicinal and healthcare systems. It also provides the genetic base for the continuous upgradation of agriculture, fisheries, and for critical discoveries in scientific, industrial, and other sectors. So the rapid erosion of biodiversity, इनमें flora और fauna दोनों आता है, in the last few decades has impacted on the health of the land
water bodies, and also people or human beings. So what are the measurements of checking or enhancing the conservation of biodiversity? Number one, by making legislation, niyam. Second, in situ conservation, जिसमें कि हम बायोडाइवर्सिटी को वहीं जाकर नेचुरल कंडीशंस में उनको कंजर्व करते हैं by either by making national parks, sanctuaries. Third, ex situ conservation, that is conservation of plants and animals, preserve or protect them away from their natural habitat. जैसे plants के केस में हम टिश्यू टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं. These are some of the images of biodiversity. ये biodiversity park है, क्योंकि बीच-बीच में कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल भी आएंगे, वो केवल आपको समझाने के हिसाब से है. So diversity itself life protected. बायोडाइवर्सिटी में यहाँ देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल एनिमल्स के भी हैं, तो उनका भी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स. कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ, the people all over the world have stopped unnecessary deforestation. मतलब पेड़ों को काटना. Our government has also made laws to prevent unnecessary felling of trees. Government has also decided to declare certain forests as protected areas. These protected areas are called reserves or wildlife sanctuaries or national park. Here, no one is allowed to hunt animal or flora also, or use an overexploitation of flora, matlab plants. There are about 150 wildlife sanctuaries in India. People come from all over the world to see these sanctuaries. They consist of some of the most beautiful and rare animals and plants. जैसे क्लास में जो बच्चे आए थे मैंने बताया भी था कि बलिया में एक ही बर्ड सेंचुरी है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, सुरा ताल बलिया, बसंतपुर, जिसके करीब, जिसके किनारे विश्वविद्यालय बना हुआ है. वहां पर खास चावल की वैरायटी भी मिलती है जो केवल पानी में ही होती है. For the conservation of forest, following steps can be taken. First, conservation of forest is a national problem, so it must be tackled with perfect coordination between forest department and other departments, including local people. Second, people's participation in the conservation of forest is of vital importance, so we must get them involved in this national task. Third, the cutting of trees in the forest must be stopped at all cost. Fourth, afforestation. Afforestation का मतलब है नया फॉरेस्ट लगाना. एक टर्म और इस्तेमाल होती है रीफॉरेस्टेशन, माने अगेन जहां पे काट दिए गए हैं पेड़ वहां पे लगाएं. ए माने एकदम नई जगह पे फॉरेस्ट लगाएं. तो एफॉरेस्टेशन और स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव should be launched on grand scale. Next, celebrations of all functions, festival should be preceded with the tree plantation. कोई भी फंक्शन हम करें तो पूरे साल भर कोई ना कोई पौधा जरूर लगाएं. Cutting of timber and other forest produce should be restricted at all. Grassland should be regenerated. मतलब घास के मैदान होने चाहिए हमारे आसपास जहां भी पॉसिबल है. Forest Conservation Act 1980 should be strictly implemented to check deforestation.
जहां तक संभव हो पेड़ों को नहीं काटना। हाँ, यदि कोई पेड़ सूख जाता है तो वो भी आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही कटेगा, हम नहीं काट सकते उसको। तो हरा पेड़ को काटना बिल्कुल भी आपका पनिशेबल है। Several centers of excellence have been set up and awards should be instituted. These are some of the images of the forest and its conservation. कि हम कैसे स्कूल लेवल पर बच्चों को बता रहे हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं था वहाँ पे एफॉरेस्टेशन पौधों को लगाया जा रहा है। ये एक तरह से रिफॉरेस्टेशन है और हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें पौधों को नहीं काटना है जब तक बहुत जरूरी ना हो। डिफॉरेस्टेशन इन अमेज़न एंड अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट, वहां पे क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि अमेज़न रीजन जो कि अमेरिका में है और ऑस्ट्रेलिया में भी, अफ्रीका में भी आग लग जाती है बुरी तरह, बहुत लंबे समय तक आग लगती है बहुत बड़े एरिया में, जिसमें फ्लोरा और फौना दोनों के नुकसान होता है। तो फिर वहां पे डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारी चीजें दे रखी हैं। लेजिस्लेशन फॉर कंजर्वेशन, various laws and acts have been passed in Indian Constitution for the protection and conservation of various natural resources. Some of them are Environmental Protection Act 1986, Forest Conservation Act 1980, चिपको मूवमेंट 1988 और भी बहुत सारे नियम पहले से ही हैं। तो हमें वैसे भी लोकल इन चीजों पे बहुत अच्छे से आपका ध्यान देना है। सो थैंक यू वेरी मच। और आपको यदि कुछ भी पूछना है तो आप ऐसा व्हाट्सएप पर अलग से पूछ लीजिए, तो मैं उसको अच्छे से डिटेल आर्टिकल डाल दूंगा आपको। तो आज के लिए ही केवल इतना ही। कल फिर कुछ और नया टॉपिक आपको देंगे, जैसे नेशनल पार्क क्या होते हैं, सेंचुरीज क्या होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं,